Namaskar kids, welcome back to New Era Global School. I'm your charming miss and we are going to learn EVS. So as of now, हमने अभी chapter number 11 ख़त्म किया before the short break of submission, and now we'll be stepping ahead to a term 2 course. हमारा term 2 का जो course है that is chapter number 12 and chapter number 13. तो आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जो है वाटर साइकिल. चैप्टर नंबर 12 विच इज वाटर साइकिल. बिफोर जंपिंग इन टू द चैप्टर आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी. मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. लेट्स बिगिन. इट वॉज अ विंटर टाइम एंड देयर वॉज ब्यूटिफुल स्नो ऑल अराउंड. सर्दी का मौसम था और वहाँ पे खूबसूरत बर्फ जमी थी ऑल अराउंड, सभी जगह पे. टू फ्रेंड्स चीनू एंड मीनू वॉज गोइंग टू टीनूज हाउस. यानी कि दो फ्रेंड थे चीनू मीनू जो टीनू के घर जा रहे थे. ऑन द वे दे सो अ फाउंटेन विच वॉज कवर्ड विथ स्नो. मतलब रास्ते में जो फाउंटेन था, फवारा जो था, वो बर्फ से कवर अप था. फिर चीनू पूछ रही है कि देखो देखो ये जो पानी है ना उसको किसी ने आइस में चेंज कर दिया. लुक लुक, समवन हैज चेंज्ड द वाटर इनटू आइस. एंड मीनवाइल टीनू कम्स इन. और फिर टीनू रास्ते में ही मिल जाता है. मीनू आस्क टीनू, डू यू नो who has changed the water into ice? Chino says someone has changed the water into ice. Can you explain who changed it? तो फिर मीनू पूछ रही है टीनू को कि आपको पता है कि ये किसने किया, किसने पानी को आइस के फॉर्म में चेंज किया. तो फिर सुनिए टीनू क्या बोलता है. No, no one has changed the water into ice. It is the water which has changed its form. Water has changed its form. Water? Does water have different forms? Really? So, this was the highlight which we are going to study in this chapter. Different forms. Does water exist in different forms? यानी वाटर के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. अगर होते हैं तो कौन कौन से हैं? एंड हैव यू एवर वंडर्ड कि आइस कैसे फॉर्म होती है? आइस इज फॉर्म्ड. ओके, आपके सारे सवालों का जवाब यह चैप्टर में आपको मिल जाएगा. विल स्टेप इन और फिर जैसे जैसे इट विल कम आई विल एक्सप्लेन यू. ओके. So today we'll have a short introduction and then we'll focus on our hard words. Chapter number 12, Water Cycle, and here are the learning objectives which we are going to learn. After you have completed this chapter, you should be able to, यानी कि ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए. What you are capable to see. What are those points? Okay. How water changes from one form to another. यानी पानी जो है वो अपना फॉर्म कैसे चेंज करता है from one form to another form. What is water cycle and how it happens. यानी कि water cycle क्या है और वो कैसे होता है. How it happens. Identify different forms of water. यानी अलग अलग जो फॉर्म है वाटर के वो. और the different forms of water in nature. यानी कि नेचर में कौन से डिफरेंट फॉर्म है पानी के. There arises a question. What form does water take on our earth? यानी कि हमारी धरती पे वाटर कौन सा फॉर्म लेती है, मतलब कौन से फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है. इन विच फॉर्म? डू यू नो?
liquid form. Which form? Liquid form. Okay. We'll learn what is liquid, solid and gas form of water. But just telling, on our earth, water exists in liquid form. On page number 128. And the topic is forms of water. We'll be going through the hard words. The first one is steam or water vapor. Steam or water vapor. What is a steam? Can you say what is a steam? Okay. A steam is a vapor which arises by heating any substance. यानी कोई भी चीज़ को अगर गर्म करो और उसमें से जो वेपर यानी इन फॉर्म ऑफ गैस जो निकलता है, जो धुआं जैसे निकलता है, दिस वन यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज कॉल्ड स्टीम. अ वेपर फॉर्म which comes from heating any substance. Then ice. Ice yani baraf. You all know that? Okay. Freezing. Freezing yani jamna, or you can say to freeze. Melting yani pighalna. Can you see in this picture? The ice cube is melting. Getting it? Okay. Now, on page number 130, it is water droplets, यानी पानी की बूंदे. And now the last one is water cycle. The whole process, the way we get a water as a form of rain or as a form of in water body or vapor, you can say anyway. The continuous process that happens is called water cycle. The cycle is called water cycle. Let's be back on page number 127, the front page of the chapter. Take the sources of water shown below through the maze to the correct statement that describes them. यानी कि ये जो पिक्चर दिया है उसे ये जो नरेशन यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पे we'll find the way of it. The first one is pond. The first one is pond. Let's look towards the statement. The A one is narrower than river with less water. It has less water, but it is not narrower than river. Let's find in another option. Surrounded by land on all sides. Yes, pond is surrounded by land on all sides. So let's make the way. We'll start with here. We'll go and we'll take a turn and let's find out the way. Where should we go? Here, here. It will be all same. So we'll go like this. Okay. Then the second one is stream. Let's find in the statement. Narrower than river with less water. Yes, streams are narrower than river with less water. Let's make it out the way. And we'll go this way. Okay. Then ये आपका homework task है. You'll find the way for rain, river and sea in your homework. तो आप rain, river और sea के way find करेंगे from this three statement or the narration. And do write your hard words in your EVS notebook. Bye bye. Take care. Keep smiling.